Wingardium Leviosa. It's Leviosa, not Leviosa. Hey guys, welcome back to our channel. आज हम बहुत दिनों बाद ऐसे बैठ के वीडियो बना रहे हैं and really reminds me of the initial times हम ऐसे वहाँ पे बैठ के वीडियो बनाते थे. विक्टोरिया पार्क में आए हुए हैं किचनर में. बहुत टाइम बाद हमारा कॉन्डो भी पास में. इनफैक्ट दिख रहा है. ओए दिख रहा है कॉन्डो. Of course, honey. यहाँ से दिखता है. हाँ. ओह शिट, क्या एंगल है. नाइस. एनीवेज हम थोड़ा बह गए. Yes. बट आज की वीडियो में हम Q&A करने वाले हैं. हमने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि if you want to ask any questions, you can do that, and a lot of people asked a lot of amazing questions. We'll be answering a lot of those questions today, and we have divided the entire section into 4 or 5 different parts, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पर्सनल क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं, तो वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. देन वील टॉक अबाउट. I think वो सबसे बाद में होना चाहिए. नहीं, वो सबसे पहले करेंगे. तो सबसे इंटरेस्टिंग नहीं, तो सबसे इंटरेस्टिंग हम सबसे पहले करेंगे. उसके बाद a lot of people you asked about jobs, अलग-अलग क्वेश्चंस थे जॉब से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हाउसिंग मार्केट के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बिकॉज आई एम अ मॉर्गेज एजेंट. वैसे तो ग्रो विद मैप पे भी बहुत कुछ है, बट वील डिस्कस अबाउट दैट. एंड इन जनरल भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दैट वील डिस्कस. तो 4-5 अलग-अलग हेड्स के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The first question is, how does one motivate themselves when she is constantly failing to immigrate to Canada since 2017? इसका आंसर मैं देना चाहूँगी क्योंकि I think you should start from figuring out कि आप Canada move क्यों होना चाहते हो. And then if you have your reason, then the second step is, if not Canada, then if you can go to other countries as well. Consider other countries as well. Because there are a lot of good countries that आप कंसिडर कर सकते हो. एंड कैनेडा इज़ नॉट द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस. और हमें लगता है कि कैनेडा पहुंच जाएंगे तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी. एक पर्सपेक्टिव जो कि बहुत लोग कैरी करते हैं और हम लोग भी कि यहाँ तक पहुंच जाए. बट आई थिंक द मेजर स्ट्रगल स्टार्ट्स आफ्टर यू लैंड हियर, गेटिंग अ जॉब, गेटिंग अ हाउस, सेटलिंग एंड एवरीथिंग. बट आई थिंक एक स्ट्रगल पहले भी हो जाती है, राइट? बिकॉज कई बार जब इमिग्रेशन नहीं हो रहा होता, पीआर नहीं आ रहा, पीएनपी नहीं हो रहा, सो यू कम ऑन स्टडी वीजा. तो उसके बाद एक स्ट्रगल ये भी है कि स्टडी वीजा में अपनी फीस करनी है, सब कुछ करना है. उसके बाद वहाँ पे भी लिविंग एक्सपेंस है, वहाँ पे भी स्ट्रगल है. उसके बाद पीआर लेना है, उसके बाद हाउसिंग और वो वाली स्ट्रगल भी शुरू होने वाली है, राइट? सो आई थिंक लाइक सिमरन सेड, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू कम टू कनाडा, रीजंस क्या है, और ये भी समझना है कि क्यों नहीं हो पा रहा 2017 से. लाइक 5 years हो गए, क्या आप स्टडी वीज़ा पे नहीं आ सकते, या स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करा है बट यू आर नॉट गेटिंग थ्रू, तो उसमें कोई रीज़न है. और अगर कोई भी तरीका नहीं निकल रहा, तो इफ़ यू रियली वांट टू गो आउट, लाइक सिमरन सेड, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर अदर कंट्रीज, और टू बी ऑनेस्ट जस्ट बी हैप्पी इन इंडिया, राइट? इंडिया बी अच्छा है, राइट? इट्स नॉट लाइक लाइक मूव टू अदर सिटीज. लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली से मूव होने का हमारा रीजन था कि पोल्यूशन है, बट देयर आर लॉट मोर गुड सिटीज इन इंडिया दैट यू कैन एक्सप्लोर फॉर मूविंग देयर. एक टाइम ऐसा था, हमने पहले शुरू में बताया था, एक टाइम ऐसा था हमें लगा था कि पता नहीं हमारा ड्रॉ आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज वो बैक टू बैक ड्रॉ हो गया, हमारा हो गया. सो वी दैट हैपेंड. बट अगर नहीं होता तो हम देहरादून गए थे. हमने बोला था यार एक काम करते, देहरादून रहते हैं, राइट? सो बिकॉज वहाँ पे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, पहाड़ भी पास है, मसूरी पास है. सो आई थिंक all those options, if you sit down with your spouse, if you are married, I think that will be a way to go. Next question is, can you be my guru? Guru matlab enter. Okay. So I actually know this person who has asked this question. So look, so I don't have a mentorship program right now because I am myself learning, but there is something that I am working on. It's not a mentorship program, but it's more of how I can, whatever I have learned in the last, not just in the last 2 years, but in the last 10 years of first starting my business and doing my jobs and everything, right? I think I'll be starting something. Something is cooking, but yeah, I don't do one-to-one mentorship as of now, but the guy who has asked the question, you are a good friend, just call me whenever you want to, right? So yeah. Next question, how do you both resolve your disagreements? अब हम कपल है, 2 डिफरेंट लोग, हमारे डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभी, बट वी जस्ट टॉक अबाउट इट. एंड समटाइम्स अगर मैं ज़्यादा गुस्सा हूँ तो नवजोत डजंट से एनीथिंग, एंड इफ समथिंग ही इज वो तो ही डजंट. और जब हम दोनों बोल देते हैं तो हम टाइम आउट कर लेते हैं. हम बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं करना, राइट? सो आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स ना एक होने भी चाहिए.
हाँ होने भी चाहिए राइट. अगर सब कुछ सही सही रहेगा तो फिर वो हनीमून फेज ही चले जा रहा है और 7 साल तक वो तो नहीं चल सकता राइट. हमारा चल रहा था काफी साल तक बट आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स तो तभी भी होते थे, बट आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स लाइक अगर आप हर चीज़ ही अग्री करते जाओगे दूसरे बंदे के साथ, तो दैट पर्सन और इवन यू विल स्टॉप ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल. So it's important to have your point of view as well, and sometimes the other person is not able to understand, तो make it simpler and make them understand कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है. एंड आई Yeah. थिंक एक चीज़ जो जिस पे डिसएग्रीमेंट बहुत सारे लोगों का होता है, हमारा उतना नहीं होता बिकॉज वी हैव जस्ट डिवाइडेड आवर रोल्स इज फाइनेंसेस. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कपल टू बी ऑन द सेम पेज ऑन फाइनेंसेस. जैसे सिमरन और मैं बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड थे. शी इज फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड. वो अलग बात है, सिमरन इज डूइंग अ जॉब नाउ, आई एम डूइंग माई बिजनेस, बट वी आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड. सो कमिंग ऑन द सेम पेज ऑफ हाउ वी आर गोना टेक मनी फ्रॉम आवर अकाउंट्स, हाउ वी आर गोना spend it, how we are going to make a budget, it was a little bit different. But I took the responsibility, but because I think I was better at managing finances. You think so? I think but yeah, it's very important to not have disagreements on finances. If that's happening, I think it's very important to have a discussion and have a time out. Next question. I missed meeting you in Surrey. When are you coming to BC again? So अभी हम जब BC गए थे, we have family there, so we decided कि साल में एक बार ही हम BC जाएंगे और साल में एक बार वो टोरंटो आएंगे. So हमारा टारगेट है कि हम नेक्स्ट ईयर भी BC आए, and then we'll definitely meet you. How big a Potterhead is Simran? I am a big Potterhead, and today we got to know that Hagrid passed away. The guy who played the Hagrid's role. I'm a little sad. और मुझे लास्ट वैलेंटाइंस में नवजोत ने इतना बड़ा हैरी पॉटर का लेगो कास्टल दिया था. सो माई 2 फेवरेट थिंग्स इन वन, जो मैं अभी तक नहीं बना पाई हूँ बिकॉज हम लोग थोड़ा मूव का चक्कर चल रहा है. तो वो नए घर में, वो जहाँ पे बनेगा ना, वो वहीं पे पड़ा रहेगा बिकॉज इट्स सो हेवी एंड it's huge. It has 6,000 pieces. So yeah, so I think वो नए घर में जाके बनेगा, but yeah. And I'll make a video on that also. Next question. Who is your mentor? So I do have a mentor which is Matthew Shantz, जो Grow with NAF पे देखते हैं. They would I have learned a lot of mortgages, all that I know on mortgages, a lot of that he taught me. I am having a new mentor whose name is Thomas. He will also be on the channel very soon. So he's based in the US. Now why I'm getting a US based mentor, and we also said that we are going to US, so I don't think that's a surprise, but anyways, I will have a new mentor soon. But mentorship ना सिर्फ लोगों से नहीं होती. I think you can get mentorship from books. You can get mentorship in people you follow on YouTube. For instance, I follow Gary Vaynerchuk, and he has been a mentor. और मेरे कमरे में भी his quotes are there, and I can buy anything that he'll come up with. So I think mentorship comes in different forms, and books and people who you look up to are the first people, and then if you want to get deeper into a topic, then you need actual mentors, and sometimes they come at a cost. Yes. And for me, my mentors usually have been books, and online stuff. But recently, when I moved into this new company, I have found actually mentors in my, the owners of the company. They are pretty good, and I'm learning a lot from them. Next question. Has Simran passed a driving test? Yes, Simran already has a driving test. जो आपने वीडियो देखी थी उससे पहले मेरे पास ड्राइविंग टेस्ट का I have a G2 license, but it's just that I was really scared. मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, and I was a little scared, and I just बोला कि just get me some practice done so that I can drive आराम से. So I needed that. So that's where the catch is. Are you getting a new car? Yes, you are getting a new car. And it's Simran's dream car, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा देखा है by the way. But yeah, that we are getting in December, and you will Hopefully know in when December. we Yes, get the car. you'll be the first people to know. Yeah. Next question. What are your views on living in basement and how it affects your mental health? See, इसका question इस question का answer ना, if I would have been in a base, if like हमने जो basement में 5 महीने हम जो रहे थे, I would say हाँ ठीक है, chill है, मतलब जो भी है मेहनत तो करनी है, जब आया तो नहीं करनी. और हम तो जब आए तब कोविड ऐसा था कि पता ही नहीं लगी थी कि लाइक हम लोग सब जिंदा बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे. बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट बेसमेंट ऑल्सो. लाइक उनके घर भी, दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी गुड फ्रेंड्स, बट क्योंकि इट ब्रिंग्स बैक दैट टेंशन एंड एंग्जाइटी टू मी. बट जब हम तब वहाँ रह रहे थे ना, तब इतना नहीं लगा था. हाँ ठीक है, सभी तो रहता है, हम भी रह ले, क्या हो गया. सो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, एंड स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में ये जो इनिशियल जो स्ट्रगल्स होती है. आई थिंक मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है.
मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है ऐसा नहीं है. इनफैक्ट वन ऑफ माई क्लाइंट्स दे almost were not like they almost cried, right? And I could relate to it because we also lived in a basement, and then so I think if it gets to that, then it's always better to move out of the basement. That's what we did after 5 months. But again, you have to look at your finances as well. हम दोनों की job लगी थी तभी हमने करा था. But again, yes, I think basements can be gloomy, especially अगर उन्होंने windows नहीं है तो. But again, it's temporary and it's okay. Yeah. The main part is it's temporary. Yeah. Next question, how has been your experience so far with Heathwood Homes? So Heathwood Homes का experience अभी तक बहुत अच्छा है. They are on time. They keep us updated. They don't keep us updated कि क्या चल रहा है. Actually, okay, let me step back. So हमारे इस टाइम 2 घर हैं जो प्री कंस्ट्रक्शन है, एक कैलगरी वाला और एक ये हीथवुड. अब कैलगरी वाले के ना हमको हर हफ्ते अपडेट आते हैं कि अब ये प्रोसेस चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है. और कई बार वीडियो टूर्स भी आते हैं कि देखो ये हो गया. So एंड हीथवुड का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो तो हम चले जाते हैं देखने के लिए अपनी क्यूरियोसिटी के लिए क्या हो रहा है. बट उनकी क्लोजिंग डेट जल्दी आ गई. वी कैन सी दैट प्रोग्रेस हो रही है. इट्स इजियर फॉर अस टू सी द प्रोग्रेस बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू अस. बट या ओवरऑल आई थिंक हीथवुड होम्स का जो एक्सपीरियंस था दैट वाज रियली गुड एंड दे आई एम प्रीटी एक्साइटेड व्हेन वी मूव इनटू द हाउस. Planning शुरू हो गई already. Next question, how is your health doing? Are you guys focusing more on your health now? Yes, we are. हम लोगों ने नजर कुछ बताना चाहेगा? So I have now paid a personal trainer Hired in India. Yeah. So वो daily I am actually training at least 4 or 5 days a week. So वो सब हो रहा है, strength training वगैरह ये सब. खाने पे ध्यान रख रहे हैं. निकल जाती है. खाने पे भी ध्यान काफ़ी ज़्यादा रख रहे हूँ अब. I've lost 2 kgs in the last 2 weeks. So but मेरा weight बहुत जल्दी कम होता है. So I know that if I take care of my health. But yeah, that's there. And सिमरन भी धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा. Yes, slowly. Yes, हम लोगों को करना है इस पे फोकस. बाकी बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करें. Now health is our priority. So next question, how was our Karwa Chauth? So it was a very heavy day for Navjot. Navjot was not at home till 8:30 and we personally don't celebrate Karwa Chauth. Navjot कह रहा है तू भूखी नहीं रहेगी because I cannot stay तो मेरे को सिंपल ही होता है कि सिमरन अगर करवा चौथ if she is fasting I have to fast as well and I genuinely cannot fast because मेरे को अपने मील्स पूरे करने होते हैं because मेरे को सिर दर्द बहुत होता है अगर मैं खाना ना खाऊं तो and मैं काम नहीं कर पाऊंगा अगर वैसा होगा तो मतलब I don't see myself fasting and therefore I don't let Simran also do it. So yeah, it was like nothing actually. 8:30 बजे तक मैं काम पे था और उसके बाद हमने फोटोज देखी लोगों की जो करवा चौथ जिन्होंने बनवाया था and that's it. Next question, आपने ICCRC बनने का क्यों नहीं सोचा? That would have been helpful for so many people. मेरे को इंटरेस्ट नहीं था to be honest. We were making free videos and everything immigration पे. फिर immigration भी थोड़ा slow down हो रहा था. Plus जो पढ़ाई थी वो इतनी interesting नहीं लग रही थी. उसके बाद भी it would have been the same thing. So I have another answer to this. I think अगर ICCRC agent नवजोत बनता तो he would have been able to help less people and that would have bugged him. क्योंकि मतलब the way immigration laws are changing, and stuff, you would have been able to help less people. Why? Yeah, because immigration. Oh yeah, from an immigration point of view. Yeah. Acha, in general, okay. Yeah. Now I'm a mortgage agent and therefore I'm able to get more people houses. हाँ, that makes sense. But again, rules बहुत strict होते हैं इन चीज़ों में, right? And me becoming an RCIC, I think the bigger reason was वो ठीक है एक reason है, but it didn't cross my mind इतना ज़्यादा. But I think the biggest reason was मेरे को इतना interest नहीं था to do that पढ़ाई and do that full time. Next question, when are we having a meetup in Toronto या GTA area? बहुत फनी है. हम कैलगरी गए तो कैलगरी में मीटअप करा, हम वैंकूवर गए वैंकूवर में मीटअप करा. बट समहाउ हम यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे मीटअप नहीं कर पा रहे. बट इसको ना जल्दी से करना पड़ेगा बिकॉज अब सर्दियाँ आ जाएंगी फिर नहीं कर पाएंगे. तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 30 days और सो वी शुड प्लान अ मीटअप मे बी इन किचनर फर्स्ट एंड देन वील सी GTA में कैसे करने हैं. बट या डू वॉच आउट फॉर आवर Instagram हैंडल फॉर द मीटअप.